Lord Jim, novel by Joseph Conrad, chapter number 16. Jim prepares to leave Pethusian, the remote settlement, where he hopes to start a new life. Marlowe describes his final moments with Jim before departure. Though nervous, Jim feels a sense of hope and purpose, believing this is chance to prove himself. Marlowe, deeply moved, watches him go with the mixture of concern, admiration, unsure of what fate awaits him. Next chapter, chapter number 17. Marlew narrates how Jim arrived in Pathusan, a remote and dangerous place ruled by rival local powers. Upon arrival, Jim is imprisoned by Raja Alang, one of the local leaders. However, he eventually escapes with the help of Doramin, a respected tribal chief. This marks the beginning of Jim's new life, where he will have the chance to earn respect and authority in a land untouched by his past. Next chapter, chapter number 18. In this chapter, Marlowe continues telling the story of Jim's life in Pathusan. Jim's new life in Pathusan. Jim is now fully settled in Pathusan. The people respect and even worship him like a hero. They call him a Tuan Jim, meaning Lord Jim. He brings peace between the two rebel local groups. Raja Alang, a corrupt and greedy local ruler, and Sharif Ali, a dangerous warlord living in a hilltop fort. Jim's brave plan. Jim decides to help Doraman, a respected leader of the Bughish people or Bughish community. He plans a bold attack against Sharif Ali, who has been terrorizing people. This mission is dangerous, but Jim leads it fearlessly. The attack is a success. Sharif Ali is defeated and the fort is taken. The victory makes Jim a legend in Patusan. So Jim becomes a leader. After the victory, the people fully trust Jim's leadership. He refuses personal riches or titles. He only wants respect. Jim only wants respect and a chance to live with dignity. Jim becomes a symbol of justice and peace. Doraman, who has supported him, becomes like a father figure to Jim. Jim and Jewel. Past Patna incident. Jim develops a romantic relationship with Jewel, a mixed race woman who lives with strange friends. Jim is deeply in love with Jewel is deeply in love with Jim. But Jim is haunted by his past and is afraid to make promises he can't keep. There is a sense of emotional distance. She fears he will leave her one day. Next chapter, chapter number 19. Jim's life after the attack. After defeating Sheriff Ali, Jim becomes a hero and leader in Pathusan. The people now call him Tavon Jim with love and deep respect. Doraman's role. Doraman, the leader of the Burkish tribe, supports Jim like a father. Jim lives under Doraman's protection and gains more influence. People from other groups also start trusting Jim's decisions. Jim's internal struggle. Even though he is a hero now, Jim still feels guilty about running away from the Patna. He wonders, can a man truly escape from his past? He tries to bury the past through good actions, but he does not feel fully free. Jim is rebuilding his image through bravery and service. Jewel's love is strong, but Jim's fear of the past keeps him distant. Jim struggles between who he was, a coward, and who he is becoming, a leader. Next chapter, chapter number 20. Marlowe visits Jim in Pathusan. In this chapter, Marlowe finally visits Jim in Pathusan. Jim welcomes him with warmth and joy. Marlowe sees that Jim is completely transformed, calm, confident, and respected. The people look at him with faith and admiration. A peaceful kingdom. Marlowe observes that Jim lives like a king in Pathusan without guards, fear, or weapons. He walks freely because people trust him blindly. There is a peace in the land, and Jim has brought justice and order. Even corrupt local ruler Raja Alang now respects Jim's power. Talk about Jewel.
Jim talks to Marlowe about Joelle, the woman who loves him. He admits he loves her but is afraid to make promises. He tells Marlowe she thinks I will leave her. Jim feels that his past is like a shadow, something he can't fully escape. Jim's reflection. Jim shares his inner feelings with Marlowe. He says he finally feels like himself in Patterson, but he still wonders, am I truly free from my past mistake? Marlowe realizes that Jim is both happy and haunted. He was found peace, but not completely forgiveness. Marlowe sees that Jim is no longer the weak, uncertain man he once was. Marlowe leaves Patterson feeling hopeful yet uneasy about Jim's future. तो क्या होता है, ट्रायल में उसको पनिशमेंट मिली थी कि उसका सर्टिफिकेट जो है सेलर का विदड्रॉ हो गया है, वो कभी भी वो वर्क नहीं कर सकता। उसके बाद वहाँ पर उसकी लाइफ वो है वो बहुत शेम्ड फील करता है कि वो क्यों पटना जो शिप थी उससे क्यों वो उसने जो है बचकर निकल गया, क्यों नहीं उसने अपने ड्रीम को फुलफ़िल किया, उसको शिप को बचाने के लिए क्यों है उसने हेल्प नहीं की। तो ट्रायल के बाद में उसकी लाइफ क्या होती है, वो वहाँ पर जब कहीं भी जब जॉब करता है तो वहाँ पर उसको लोग पहचान लेते हैं कि यार ये वही पर्सन है जिसने पटना इंसिडेंट में अब जो है जो भाग गया था पटना इंसिडेंट्स में। तो ये मिस्टेक जो है उसको अंदर ही अंदर में उसको खुद ही को वो अपने आप को ही वो गिल्ट महसूस करता है, तो वो सेल्फ अपने से ही हेटरेट करता है। वो इनसाइड सोसाइटी उसको इतना कुछ नहीं कह रही बट वो अपने आप से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, क्योंकि उसने जो ड्रीम देखे थे, जो आइडियलिज्म उसका था, उस पर वो पूरा नहीं खड़ा हुआ। तो उसके बाद उसके फ्रेंड्स मार्लियो ने जैसे दैन स्टेन ने उसको एक ऐसी जगह पर भेजा जैसे कि पैथोसन पर भेजा जहाँ पर जिम को कोई भी नहीं जानता, ना उसके बारे में जानता है, ना उसके पास्ट के बारे में जानता है, ना उसके पास्ट इंसिडेंट के बारे में जानता है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो पैथोसन पर उसकी न्यू लाइफ स्टार्ट हुई। वहाँ पर जो थे दो जो सैरिफ अली थे एंड राजा अलंग था, वहाँ पर जो करप्ट लोग थे, ठीक है, जो वहाँ के एक्चुअल कम्युनिटी जो थी बुकिस कम्युनिटी को परेशान करते थे, तो उनके विरुद्ध उसने अटैक किया, तो वो उस अटैक में सक्सेसफुल भी हुआ। एंड देन जो वर्किस कम्युनिटी थी वो उसको लाइक करने लगी, किसको, जिम को एज आ हीरो मानने लगी, जिम को एज आ ब्रेव पर्सन मानने लगी। एंड जिम भी वहाँ पर जो है वो हैप्पी है, अभी उसको लग रहा है कि वो अपना ड्रीम जी रहा है जो उसने ड्रीम कभी देखा था, तो वो भी अभी हैप्पी है। बट कभी ना कभी उसको उसका पास्ट टॉन्ट करता है कि उसने पास्ट में इस तरह से किया था, वो पास्ट अभी भी वो चीज़ों को सोचता है। एंड वहाँ पर उसकी एक फ्रेंडशिप होती है ज्वेल नाम की गर्ल के साथ, वो भी उसको लाइक करती है एंड वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। बट जिम कोई भी प्रॉमिस नहीं करना चाहता उसके साथ, क्योंकि उसको अपने पास्ट के बारे में पता है कि क्या हुआ था उसके पास्ट के साथ, तो वहाँ पर भी वो रिलेशनशिप नहीं बनाता है उसके साथ। सो देन मूविंग फर्दर मार्लियो यहाँ पर विजिट करता है पैथोसन पर, उसकी लाइफ को देखता है, फिर उसके साथ वो बातचीत करता है कि येस ऑल्दो ही इज़ अ हीरो, ऑल्दो ही इज़ अ डूइंग वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, बट नाउ फिर भी उसके पास्ट का गिल्ट उसके मन में अभी भी है, क्यों वो वहाँ से भाग गया था। सो मूविंग फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या होता है।